with the university song. I would request everyone to please stand for the same. Ame jyot jalavi srushti navali sahasa sarjanhara. Ame Baroda vidya pithana sapna saravanara. Ame jyot jalavi srushti navali sahasa sarjanhara. Ame nagar kusuma karnara. Ame magar magar dhai parnara. Aganavad ame barnara. Ame dainati virani harnara. Ame vadodharana vidya pithana sapna saravanara. Ame jyot jalavi srushti navali sahasa sarjanhara. Shri Sayaji vidya pithana jnana deepane dharnara. Shri Sayaji vidya pithana jnana deepane dharnara. Satyam Shivam Sundaram Mantra Anantaram Paranara. Before starting this auspicious session, it is very necessary to take the blessings of Goddess Saraswati. So I would request our guest, Swamiji, our Honorable Professor Parimal Vyas, Vice Chancellor, our Dean, Professor Jairaj C. Jadeja, Dr. Jayant Dave, and our teaching members to please come up on stage and light the lamp. माँ सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। दूर इस अज्ञान उदधि से, दूर इस अज्ञान उदधि से वीणा तार दे
I would now request our Honorable Vice Chancellor, Professor Parimal Vyas, to welcome Swamiji. I would now request our Dean, Professor Jairaj C. Jadeja sir, to welcome our Honorable Vice Chancellor. I would now request our Dean sir to welcome Dr. Jayant Dave. So this event is taking place because of Jayant Bhai Dave. So I would now request Professor Dr. Sunita Sharma to welcome our Dean, Professor Jairaj C. Jadeja. I would now request our Honorable Vice Chancellor, Professor Parimal Vyas sir, to give the welcome address. let me at the outset accept and place on record our deep sense of gratitude and sincere thanks to Swamiji, who is tirelessly working for the cause. Thank you, Professor Jadeja, for accommodating me because normally, we believe a lot in protocols which I never believe in. It's not that Vice Chancellor has to give presence. Sometimes some people, they come to me, they say, sir, you are a Vice Chancellor, you cannot welcome. I said, I don't believe in that. I'm a teacher. And these are all the adjectives, unfortunately we live 24 into 7 with these adjectives. And then we really lose the charm of living life. If we want to live a life, in fact, we have to remember that we are wonderful human beings and God has sent us to, do something good. So we have to think good, we have to feel good and we have to do good. That is what we all have to try to practice, inherit, and whenever I get an opportunity, I extend my namaskar and basic blessings of none other than His Highness Sir Sajiro Gaikwad. All this is possible because of his vision, his commitment, and I'll tell you, you can imagine we have been trying to reach out to all these millennials. I use this word very specifically, millennials. I could see so many students in formal. Yes, I'm also a professor of management, but I would advise all of you that
let us not get impressed with the Western thinking of management. It does not mean that I have got some prejudice. But I believe the scientific philosophy, our lifestyle, our karma, our sanskar, and there are, I would say, millions of people like Swamiji, where they have been, trying to preach all of us in a way we have to manage our life, the organizations to which we belong. And the organization, the first organization in which Swamiji we take our birth is a family. Family is an organization. And from there the set of values, inculcation of culture, process of socialization and civilization, it starts right from the family. And then we go on, increasing our circles one after the another, and then after 30 years, young girl would say to mom, oh, I have fallen in love with somebody, you don't know, you don't understood me, which really gives me a lot of pain. Every day you open newspaper, you find somebody committing suicide because there is no hope that he or she could now foresee from the life. What I would request all of you is that I'm not an expert to speak on values in management when the Swamiji is here. I believe we would seek the blessings. So many all other spiritual people that are here. I was just sharing in a couple of minutes interaction with Swamiji. If you are a registrar, if you are a head of the department, if you are a dean, if you are a vice chancellor, you are also supposed to have a bundle of packages with blood pressure, diabetes, heart attacks and so on. I think now that is being regarded as though you are facing a lot of stress. So, Swamiji, where I am managing about 44,000 students, with the blessings of God, 5 years, now this is the 5th year in row, I have not availed any sick leave so far. And I owe it to my team, Senate, Syndicate, all of them, they are there to support me because we are trying to realize the dream and the vision of the Sahaja of Gaikwad. I welcome on my personal behalf, on behalf of the Maharaja Sahaja of University of Baroda, on behalf of the Faculty of Management Studies, Swamiji, we need so many more blessings because we want so many people like you to come and bless our university. In last 4-5 years, we have introduced couple of experiments, be it Sir Sahaja of Gaikwad, be it Bhimrao Ambedkar ji, be it Veer Savarkar ji, or the only book which I think has made difference to lives of all human beings is Bhagavad Gita. This university has introduced a certificate course of 18 days. 18 days, people across the Baroda, they come and they enroll. And the last batch that we had in a row, we had more than 600 registrations. Let me request the Dean Faculty of Management Studies to take an initiative. Because at the university we have been discussing what happens. My students of management, you are all sitting here, my advice to you is, you will have to grow professionally, you will have to grow academically, but this theoretical input which you get or some practical exposure which you get from corporate professionals will not make you complete person, the whole person which we talk about. And what I would request, Professor Jadeja, that you can take support of Jain Daveji. We can design a small 2-day certificate course. I would say it would be a 2-day certificate course. I think 2 days I am keeping because I want that we would also invite people from industry. I have shared my expectations and requests to Swamiji that we want that like we introduce. We have already successfully launched the certificate course in Bhagavad Gita. You look at the today's talk in 2 hours, I believe Swamiji would be able to just introduce you the topic before you. I don't think values in management, it can be discussed or it can be, you can be made to understand in 2 hours. But I think anyhow, it's a good beginning. I wish that whatever that you learn today, whatever that you take today, you try to build a foundation.
And one grievance which I have, not a grievance, but I will say what is my observation. My son is also very young, MBA from IIT Delhi. When I say, beta, do you read newspaper? Papa, online पढ़ लेते. Online क्या पढ़ते वो आप ही जानो. The generation who is sitting in first 2 rows, we are using online. We are also smart. I'll tell you. ऐसे लोग मेरे पास है जो 80 साल के सुबह में 4:30 बजे मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं. तो ऐसे भी लोग हैं. लेकिन इससे काम नहीं बनेगा. मेरी क्या बात, मैं जो बात करना चाहता हूँ कि जो सबसे ज्यादा क्रूशियल रिसोर्स जो लाइफ में है वो एक है टाइम. आप किस तरह से टाइम को स्पेंड करते हैं उसके बारे में आप सोचिए. दूसरा, जो वैल्यूज इन मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, आप मैनेजमेंट भी जानते हैं. मेरे ख्याल से हमारे स्टूडेंट्स को हम बोले 50 डेफिनेशन मैनेजमेंट की वो बोल सकते हैं. इतना मुझे आपके ऊपर भरोसा भी है और विश्वास भी है. लेकिन वैल्यूज की बात क्या है? टू डू, नॉट टू डू, यस और गुड, या whether it is moral or immoral, whether you can assert, whether you can take the correct decision. मैंने बहुत बार कहा है कि मेरा काम है निर्णय करना. मैं जो निर्णय आज करता हूँ वो निर्णय सही है या गलत है वो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा. लेकिन निर्णय करना, सही निर्णय करने की कोशिश करना. सही निर्णय क्या होता है? There is nothing like right and wrong decision. लेकिन जो आपकी सोच है, आपकी जो समझ है, जैसे मुझे हमारी भगवत गीता हमको दी गई जाती है वाइस चांसलर को, उसको हम कहते हैं हैंडबुक ऑफ द यूनिवर्सिटी. वी हैव टू फॉलो हैंडबुक. जब भी कोई निर्णय करते हैं तो हम देखते हैं कि whether it is as per the handbook or not. और आजकल क्या होता है कि लोग, बहुत सारे लोग जब निर्णय करते हैं तो वो प्रक्रिया में ऑब्जेक्शंस, लिटिगेशंस, वो उनका एक पैशन है कि कुछ भी अच्छा हो रहा है तो लिटिगेशन कर दो. क्रिटिसिज्म से हम डरते ही नहीं है, क्योंकि जितना आपका क्रिटिसिज्म होता है उन सबको सबके हम आभारी हैं. प्लस 80% तो कि हाँ हम सही काम करें. तो क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. लेकिन जो भी कोई निर्णय मैं लेता हूँ तो स्वामी जी मैं ये सोचता हूँ कि कल जाकर के कोई हाई कोर्ट में इसके लिए PIL करे या लिटिगेशन करे तो हम हमारा पक्ष रख सकते हैं और हम हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज को हम कह सकते हैं कि सर हमने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है. मैं इसीलिए आप क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप सब जाने वाले हैं तो मैं आपको 2 बातें ये बताना मुझे जरूरी है. क्योंकि कोई किताब पढ़ के या किसी को सुन के हम वैल्यूज इन मैनेजमेंट है समझ वी कैन इनहेरिट इट, लेकिन प्रैक्टिस को खुद करना है. खुद को यू विल टेक डिसीजन ऑन योर ओन. दूसरा, मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ. क्योंकि आप IQ है इसीलिए आपके पास बहुत सारा IQ है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हुए, और EQ भी है क्योंकि हम ऐसे विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं. लेकिन जरूरत आज के समय में यदि आगे बढ़ना है तो SQ भी है. उसके बिना आप नहीं चल पाओगे. यदि आपको स्ट्रेस से बढ़ना है, BP से बढ़ना है तो आपको SQ का मतलब है स्पिरिचुअल पोर्शन, जो आप जानते हैं, जो समझाने की कोई जरूरत नहीं है. वो आप अपने आप को इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे यू हैव योर ओन ओरा इंटरनल पर्सनालिटी आपकी खुद की, कि जैसे कोई गलत चीज आपके पास आए ही नहीं, कोई गलत बात आपके पास कर ही ना सके, ऐसी पर्सनालिटी हमारे बच्चों की हो, ऐसी मेरी अपेक्षा हमारे डीन से और बाकी सब स्टाफ मेंबर से और सब अध्यापकों से है कि हमारा बच्चा कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी उसको खड़ा कर दो, वो हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म और राष्ट्रीयता का वो प्रतीक बन के जिए. तो ये कुछ अपेक्षाएं हैं हमारी, और मैं मानता हूँ बिफोर आई क्लोज मैं सब विद्यार्थी को मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग दुनिया में बहुत आगे बढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा जानने की हमने कोशिश करी है. तो वो अपना टाइम ज्यादातर पढ़ने में बिताते हैं. दे रीड एक्सटेंसिव. आप जो पढ़ेंगे उसके ऊपर आप सोचेंगे, आप जो सोचेंगे उसके ऊपर आप बात करेंगे, और जब आप बात करेंगे, कभी कभी क्लास में मैंने ये बात रखी है कि 24/7 हम क्या करते हैं जरा सोचिए. आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ के आप कोई अच्छा मैनेजर बन जाएंगे तो ये बिल्कुल आपकी भ्रमणा है, बिल्कुल गलत है. वो आपको केवल इट इज यू कैन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस के बारे में आपको पता लगेगा, लेकिन उसको कैसे मोल्ड करना है, कैसे रिलेट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा.
तो मेरी आप सबसे एडवाइस ये भी है कि आप एक डिसीजन ले सकते हैं लाइफ में कि एक हफ्ते में भी कम से कम एक किताब पढ़ूंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये टाइम आपके पास कम होता जाएगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को अपडेट रख पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे विषय के साथ जीना पड़ता है, तो वो टाइम नहीं मिलता। वो टाइम आपके पास है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो टाइम कम होता जाएगा। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन से मीडियम से पढ़ना है, जितना आप पढ़ेंगे ज्यादा इतना आप सोचेंगे ज्यादा। और 24/7 हम क्या करते हैं, वन इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अनदर इंडिविजुअल। वही तो करते हैं हम, एसएमएस करते हैं या किससे सेल पे बात करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो हम व्हाट डू वी डू? So 24/7 we are trying to influence the other human being, thinking that मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मुझे जो लगता है वो मेरी जो सोच है वो सही है। तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के जो विद्यार्थी मिलते हैं तो थोड़ा मेरा एक इमोशनल कनेक्ट भी फैकल्टी के साथ है, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बात करनी चाहिए क्योंकि क्लास में जो टीचर आएगा, फैकल्टी मेंबर, वो अपना काम करके वो चला जाएगा। मेरी प्रार्थना हमेशा सब अध्यापक से रहती है कि आप 5 मिनट विषय से हटके थोड़ी कुछ अपने अनुभव, अपनी जो सोच, अपनी पढ़ाई के बारे में भी बच्चों से बात करनी चाहिए। तो मैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को धन्यवाद देता हूँ कि ये वैल्यूज इन मैनेजमेंट का आज इसके ऊपर स्वामी जी का प्रवचन है। लेकिन मैं खुद उस दिन होऊंगा जिस दिन हम 30 आवर्स का एक क्रेडिट सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च करें। जो एमबीए करके जो विद्यार्थी निकलता है वो इंडस्ट्री में कहेगा कि मेरी फैकल्टी ने 2 क्रेडिट का वैल्यूज इन मैनेजमेंट का कोर्स मुझे करवाया है। और ये जो विद्यार्थी हमारे बैठे हैं, 1 मिनट विषय के हट से भी एक और बात आप सबको कहना चाहता हूँ। जब आप, क्योंकि हर बार एम्प्लॉयमेंट की बहुत चर्चा हमारे देश में हो रही है, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो उसमें हम नहीं जाते। ये ऐसी फैकल्टी में आप है जहाँ जडेजा साहब और उनकी पूरी टीम 100% प्लेसमेंट ले आती है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हमारे विश्वविद्यालय में अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक और अपेक्षा भी जो आप सबसे है, क्योंकि मैं स्पॉन्टेनियसली बोलता हूँ तो कभी कोई अच्छी चीज भूल जाता हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे आज सुबह में मैंने सोचा था और मैंने दवे जी को सामने से फोन किया कि मैं पहुंच रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। तो along with your 4th semester MBA प्रोग्राम मैं ये चाहूंगा, बाकी के अध्यापक भी इधर है, मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि जब मैं IIT रायंस के टीचिंग स्टाफ और बच्चों से मिलता हूँ तो वो बहुत सारे मुफ्त कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। आपके 4 सेमेस्टर में यदि केवल फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का स्ट्रक्चर और उसका आप 9 पॉइंट कुछ CGPA लेकर के निकलते हैं, उससे आप प्लीज संतुष्ट मत होना, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, कॉर्पोरेट में आपने एड ऑन कोर्सेज, मुफ्त कोर्सेज कितने किए हैं। जडेजा साहब ये शुरुआत नहीं है, तो आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये शुरुआत फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में होनी चाहिए। मैं तो ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि टीचर्स को भी ये कोर्सेज करने चाहिए पहले, और बाद में हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। ये अपेक्षा है, क्योंकि वी आर इन दी इरा ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। केवल 4 सेमेस्टर का आपका स्ट्रक्चर से आप सोचेंगे कि आप अपने आप को 10 साल में कहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो पहुंचने का, तो आपके पास ये सब बातें जरूरी है। जो मैंने कहा, होलसम पर्सनालिटी, आप कोई भी विषय में बात करो, हमारा विद्यार्थी उस विषय के बारे में जानता है, बात कर सकता है, सक्षम है और इंडियन वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है। आप जिस धर्म में मानते हो, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन हम धर्म में मानते हैं, हम राष्ट्रीयता में मानते हैं, हम संस्कारिता में मानते हैं, ये मेरी अपेक्षा है। मैं बहुत सारे बड़ौदा शहर के लोगों को भी यहाँ पर आज देख रहा हूँ। आप सबका भी बड़ा विनम्रता से मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मेरी प्रार्थना आपसे रहेगी कि हम एक ऐसी नगरी के लोग हैं जो विश्वविद्यालय माध्यम है जहां से हम लोगों को पहुंच सकते हैं और बड़ौदा शहर को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो आप बड़ी मात्रा में इधर आ जा पाए हैं। मुझे पता है आप दूसरे जो व्याख्यान उसमें भी आप सम्मिलित होंगे ही, लेकिन ये समय मुझे थोड़ा अनुकूल था, तो मैंने सोचा कि मैं आप थोड़ी बात करूं, बहुत ज्यादा बात नहीं करूं, लेकिन बच्चों से बात करने का मन था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। मैं स्वामी जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी मीटिंग्स अरेंज की है
लेकिन पूरे लेक्चर स्वामी जी के जो पूरा प्रवचन है वो रिकॉर्ड करते हैं। मेरी एक और भी जडेजा साहब एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जितने भी लेक्चर्स आप करवाते हैं इसका रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको वेबसाइट पे आप रखिए। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की वेबसाइट पे पूरा प्रवचन स्वामी जी का हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास पहुंच सकते हैं, ये जरिया है। क्योंकि स्वामी जी का कोई गूगल में नाम लिखेगा तो सीधा हमारी वेबसाइट पे उनका प्रवचन वहां वो पहुंचेगा, तो वो उनको भी उनका ये जो आज प्रवचन होने वाला है उसका फायदा हम सबको नहीं, जो भी लोग इंटरनेट का यूज करते हैं उनको भी पहुंचे, ऐसी मेरी एक अपेक्षा है। ये हमें ट्रेडिशन के तौर पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं सब लेक्चर्स रिकॉर्ड करके वेबसाइट पे हमें लगाना चाहिए। इसलिए नहीं कि एनआईआर में रैंक अच्छी हो जाए, नेट में अच्छी रैंक हो जाए, लेकिन ये अच्छी बात हो रही है तो हम हमारा ये दायित्व है कि हम लोगों तक पहुंचे। पुनः मैं आप सबको वंदन करते हुए आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो सभागृह से उससे विदा लेने की मैं अनुमति स्वामी जी आपसे मांगूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने समय दे रखा है तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि खास करके जो मेरे विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं उनको आज के प्रवचन से एड्रेस से बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा, और स्वामी जी का जो भी कुछ मार्गदर्शन मिलता है इसको ओपन माइंड से आप एक्सेप्ट करिए और उस लाइन पे उनके मार्गदर्शन पे आप आगे चलने की कोशिश करेंगे, ऐसे मेरी उम्मीद और अपेक्षा है और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. Now I would request our Dean, Professor Dr. Jairaj C. Jadeja, to share some few words. Very good morning. All of the course curriculum has changed, and I'll say share a few words. I don't know. I should say something about the Swamiji. I think my students should know about it, and I will say something about Professor Parimal Vyas. And Swamiji, आपको वंदन करते हुए प्रोफेसर व्यास सर, Dr. J.V. Dave sir. I was just listening to Professor Vyas, and he talked cursorily about the values in mathematics. So it just reminded me that there is a Gautamiya Shastra in which there are 5 characteristics that one has to imbibe in one's life, and that we call it is some kind of values or something like that. So, which are those? I will finish it in 2 minutes, 3 minutes, because it can go into, and as Professor Vyas has suggested to have some certificate course into this kind of thing, so we'll talk in detail in that. If I can break it in Hindi, say, saral bano. It's very difficult to become a simple person. Sundar bano, that is, you always say you become what is the kind by heart. Sumukh bano, because you are all going to reach to the pinnacle of your career somewhere, and higher you go up, and you should have imbibed the qualities of what is the humility inside you. Saral, Sundar, Sumukh, Sulabh bano. You should be accessible. And what Professor Vyas said about is that you should be able to talk. My student, if he goes somewhere, they should be able to talk on everything. The 5th characteristics in Gautamiya Shastra is you become Bahutattvavid. So I should be as a professor, or I should be as a student, because a professor should be a lifelong student. So I should be able to talk something about astrophysics to whatever it is, and exerts your attitude.
there is attitude towards excelling something. So, I mean, these are some. I request you to say a few words about this Swamiji, and I will say that Professor Parimal Vyas is our. I think we should give a big round of applause because he is the first ever dual professor of management in all over India. Now he is enjoying his second term as a dual professor, and he is very our own professor. He is professor of marketing, and he has won a lot of accolades. Of more than 12 research papers have been awarded as a best research papers, and he has produced a number of PhDs and so I mean thank you very much for giving me some time for giving me a few words. Thank you so much. I welcome you on behalf of Viditatmananda. Thank you so much, sir. Now I would request Dr. Jayant Dave, President, Divine Life Society, Baroda, to welcome Swamiji. Om Sadguru Paramatmane Namaha. Adorations and prostrations at the holy feet of Adi Shankaracharya and all his descendant gurus, including Swami Shivanji Maharaj and Parampujipat Swami Shri Viditatmananda Maharaj, blessed divinities. I shall stand only for a few minutes before Swamiji Maharaj begins the enlightening talk. You have received a message from the Divine Life Society headquarters, General Secretary Swami Viditatmananda, and he has felicitated the Swami Shivananda Study Center on the senior celebration. And he is very happy that revered Swami Viditatmananda Maharaj, is doing two talks, this values in management and relevance of ancient Indian culture in the era of technology. And he has conveyed his heartfelt pranams to Swamiji Maharaj, to the Vice Chancellor, to the faculty involved in organizing the program, and the members of the Divine Life Society. This particular program is being organized under the auspices of Swami Shivananda Study Center, which was instituted in the year 2009 in the Faculty of Arts. And this is in the sacred memory of Swami Shivanji Maharaj, who was an illustrious sage of the 20th century. He was a doctor turned sage who turned from the path of medication to the path of meditation. And just to say his life in a kaleidoscopic few words if I want to say, there are 4 stages in his life, which signify the synthesis of yoga also. As a student, he was very studious, born in South India, Tamil Nadu, in the year 1987. Passion for service to mankind drew him to medical career, where he graduated and became MBBS from Tanjore Medical College. And then he moved to Malaya, what we now call Malaysia. And the second phase of his life became, first was ideal student. Second phase was ideal professional, and all that the Honorable VC also was talking. The goal at this stage of our life should be to become an ideal professional, which means we should embody an expert knowledge plus a feeling of altruism, unselfish concern for the well-being of others. More than that, Swamiji Maharaj had Atma Bhava. He served each and every individual as if he is a living God. So that was the second phase of his life, it is called an ideal professional. And the third phase became there is an ideal aspirant, like Adarsh Shadab. So he practiced austerities for about 12 years, and then he attained spiritual illumination. In the year 1946, he became Swami Shivananda from Dr. Swami. In 1936, Divine Life Society was born. In 1948, Yoga Forest Academy. And Swami never moved out of the ashram. Only once in his life, 1915, he moved out. And at that time, Baroda branch came into being. There are 4 ideal stages of his life which synthesizes this different yoga. Swamiji Maharaj, among many things he did in his life, was one thing. He inspired Swami Chinmaya Maharaj, whom the whole world knows today as a torch bearer of Vedanta. And when he went to ashram first as a journalist, he was able to find out what the weaknesses in ashram. And he to Swami, I have got some questions. And Swami said, have you got a quest for a question? And he was struck. He said, how to ask this? He said, motive of your question will decide whether you have a quest or a question. And the world knows what Swami Chinmaya Maharaj has done. Swami Maharaj is in that descendant. Pujyapad Swami Dhyananji Maharaj, the great deal of work he has done. Ashudya Guru Kuram Coimbatore, worldwide he has done lots of spiritual awakening. Swami Maharaj is descendant in that particular parampara. And Pujyapad Swami Dhyananji Maharaj was formally educated in secular education also, and thereafter he pursued a course in this Vedanta from Mumbai. And Swamiji Maharaj at present is also the president of the Ashudya Gurukulam, Saraswatiji in USA. There is an institution called Adhyatma Vidya Mandir,
Tattva is a place. If you have time, you can just go to that website and then you can find out that Swamiji Maharaj's entire life has been spent in dissemination of knowledge of the scriptures for the last 40 years. And Swamiji Maharaj has conducted so many seminars. So he is very much familiar with Eastern and Western culture, and I think it's a great blessing. It's a great opportunity for us that Swami Maharaj lectures are going on in Baroda. And at that time, under the auspices of this particular study center and the Secretary of Management Study, we have such a wonderful subject to feel enlightened on values in management. With these few words, I close this sharing, and we look forward to an inspiring message and blessings from Swami Maharaj. Hari Om. Dr. Surendra Sundararajan to give the vote of thanks. One of Swami Shivananda's teachings is avoid, and he puts it in a poetic way. He says avoid loose talk, idle talk, long talk, big talk, and so on. So I'm going to be very brief. Revered Swamiji, Dean Dr. Jadeja, Dr. Dave, and respected members of the audience. On behalf of the Faculty of Management Studies and on behalf of myself, I express my deep gratitude to Swamiji for the very profound message that he has conveyed today. Namely that self-management guided by the right values is paramount in the world of management. And not just in the world of management, I would say in other spheres of activity as well. To put it slightly differently, it is the spiritual quotient which serves as a moral compass and which directs the emotional quotient to ensure that the right choices are made. And we have seen instances, even recently, even in the last 10 to 15 years, as to how devastating the consequences can be when the spiritual quotient is weak. Whether it was the case of the subprime crisis, which in its essence was a devastation caused by human greed, or closer home, we have seen instances of the collapse of the PMC Bank and the scam involving Nirav Modi and so on. So therefore, considering the devastation that it can unleash on society, Swamiji's message is absolutely vital. And to the extent possible, as he himself acknowledged, we should all strive to be guided by this moral compass, or in other words, spiritual quotient. And I would like to assure Swamiji that we do not teach our students about engaging in misconduct. So with these words, I would like to thank him and thank the members of the audience for their participation, and a special thanks to Dr. Dave for arranging this talk today. Thank you. Everyone is requested to please stand for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
the students, particularly in particular Jnana Prasada, in terms of one book concerning the inner innings about the Swamiji talk, and there is a book from Divine Society living in your website. So you can take this book as a Jnana Prasada before you leave. And the book which was published 2 days back only, there is Management Wisdom from Bhagavad Gita, that is also available. Normally the book price is 125 rupees, but only for 50 token rupees will give as a mark of level gratitude. So those who want may take that. Okay. And one photograph of Swamiji, all students and management.